UPSC CSE GS with India's largest learning platform and Get Plus subscription and access unlimited live and recorded courses for India's best educators. What you will get? What you will get? Daily live classes you will get. Daily live classes you will get. Live test you can get, and structured courses you can find here. Then unlimited access is also available with you. So these are the advantages. You can find it out to this place. Another one, download Unacademy learning app and be advantageous part of that. About me, this is Dr. S. M. Azad, did my MA and MPhil research work from MUJ New Delhi, educating, mentoring UPSC CSE aspirants over 10 years. Authored books, history, polity, and social issues. I teach UPSC CSE, UGC, NET, GRF. Unacademy users is also reflected before you. Prepare with 100 plus top educators. Sudarshan Gujar, Mrinal Patel, Prakash Kumar, Mudit Gupta, Roman Saini, Ayush Sanghi, and Aman Sharma, Dipanshu Singh, Ashish Malik. Comprehensive syllabus 15,519 for UPSC CSE, Polity, Governance, IR, History, Current Affairs, Geography, optional courses, Indian Economy, Science and Technology, Environment and Ecology you can find over here. UPSC CSE subscription for plus iconic courses, what you will get: daily live classes, test series, unlimited practices, daily mains question answers, and 1 month it is 9,000 rupees, and overall 9,000 rupees. 3 months you will get 7,500 per month, and overall it is 20,500 rupees. For 6 months, every month you will have to pay the 6,750, and overall you will have to pay 40,000 rupees. For 12 months it is 4,125, and overall you will get 49,500. For 24 months it is what, 3,000 every month, and you will get 72,000 rupees. And 36 months, what we can say, it is 90,000 only. So these are the advantage you can find over here. Another important thing in this connections, after getting 10% discount, what you will get: here you will getting 9,000, here you will get 8,900, here you are getting 20,500, at 22,000, here you will get 20,250, here you are getting 40,000, what you are getting, here you are getting 40,500, here you will get 36,450. For 12 months it is 44,500 rupees, 34 months 64,800, and 36 months it means 3 years. It means 3 years you will get 81,000 rupees. So overall, what we can say, use my referral code AZAD, Azad, AZAD. It is already reflecting over here, and you will get again 10% discount over there. So these are the advantages you can find over here. अब आगे आते हैं हम लोग, जो advantage की बात मैं करूं आपसे. Another important thing in this connection, in this regard, what we find about that UPSC CSE live classes, test series you can find, ultimate practices you can also find over here. Then UPSC CSE GS subscription you can find for 12 months. What is advantage? For 12 months it is 69,500. Then 24 months it is 1,07,000, and 36 months it is 1,41,000 rupees. And directly after getting this 10% discount, what advantage you can find over here? Directly you will get 62,000 instead of 1,07,000. It is 96,000 rupees. 1,41,000, 1,20,000. तो दिस एडवांटेज यू कैन फाइंड आपको मिलेगा. और जो सबसे बड़ी बात है, यूज रेफरल कोड AZAD Azad, AZAD Azad, and again the benefit of 10% you can find over there. So this is the advantage you can find over here. Next one, UPSC CSE optional subscription. 1 month it is 5,000, 6 months it is 22,500, and 12 months it is 27,500 only. For 12 months it is 40,000, and for 36 months it is 50,000 only. And after getting 10% discount, what you will get? 1 month it is 4,500, and 6 months it is 20,250. Then 24 months it is 36,000 rupees. Then 36 months it is what? 45,000 rupees. And use AZAD Azad and get the benefit over there, of what? 10%.
So another most important competitive course program is also available with you. So in this course program, what advantage you can find over here? The game field is also open and battle is also open here. So this is the advantage you can find over here. Next one, only 6 month remaining UPSC CSE 2020-21 इसके लिए जो समय बच रहा है, only you can find only 6 months for you, and the program is for 2020-21, and ultimate GS batch you can also find over here. It starts from on 26th December, but it has already been started over there, and ultimate GS 6 month 2020-21, then 2022, then 2023 you can find over here. Iconic price hike, commons to coming soon, iconic subscription, connect with your पर्सनल कोच, दिस इज द एडवांटेज. तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा? आप अपने डायरेक्ट कोच के साथ कनेक्ट हो जाओगे, कस्टमाइज स्टडी प्लानर मिलेगा और अटेंड स्टडी बट बूस्टर, देन प्रैक्टिस आंसर, देन अनदर आल्सो सेगमेंट यू कैन फाइंड ओवर हियर. मेन टेस्ट सीरीज वीक का इवैल्यूएशन भी लगातार आपको मिलता रहेगा. और जो टॉपिक मैं डिस्कस करने आज जा रहा हूं, द टॉपिक इज व्हाट? द टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म की बात करूंगा. और इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म के साथ साथ जो सबसे मेजर चीज सामने नजर आ रही है, व्हाट इज दैट? ओपियम वॉर. And this topic is most of the time is very critical and it is normally asked in the exam. So the first thing what I would like to discuss to you, please give me signal those who are getting my voice. जिनको मेरी voice समझ में आ रही है, जल्दी से आप लोग signal दे दो कि my voice is quite audible to you. मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज गिव मी सिग्नल ओवर देयर. आप यहाँ पे सिग्नल जरूर दो, आप इंडिकेट करो कि यू आर गेटिंग माय वॉइस ओवर देयर. सो द टॉपिक इज व्हाट? इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म. नीचे से पढ़ना शुरू करो और बात करेंगे हम ओपीएम वॉर की. तो दिस इज द मेन टॉपिक यू शुड हैव टू स्टडी टुडे. How did China lose Taiwan? I will come to the point in the latter part of that. Then come to the point of impact of colonialism. Please open your pen and paper. अपनी डायरी भी निकाल लो, पेन एंड पेपर भी निकाल लो, जिस चीज की मैं चर्चा करने जा रहा हूं. बिकॉज इन दिस सेक्शन फ्रॉम टुडे आई वुड लाइक टू मेक द थिंग ओवर देयर. मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स को तैयार करके लिख करके लाओ. So the impact of colonialism on Africa. Impact of colonialism. Colonialism मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉलोनीज भी बता चुका हूँ, एंड उपनिवेशवाद की भी बात मैं कर चुका हूँ. colonialism सिंपल भाषा में एक बार मैं फिर बता दूं, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी ज्वाइन किए हुए हैं इसमें. एंड colonialism is what? A condition. What important thing regarding that? An important part over there. An important part is that the important and significant part is that in this way the colonialism what is important, face it over here. Sorry for interruption. What is important, face it over. One of the important thing, impact of colonialism on Africa. अफ्रीका के colonialism की मैं बात करूंगा, लेकिन फिर से मैं रिवाइज कर दूं, फिर से मैं रिव्यू कर दूं कि colonialism है क्या. What exactly is colonialism? If you talk about what exactly is colonialism, colonialism is what? In a very simple way, in a simple manner, how you can define colonialism? You can simply define about the colonialism that the situation which were what? The situation, the powerful countries, or what we can say the big countries or the imperial country when took over the charge over what? Economic activity to the other country. जब कोई एक बड़ा साम्राज्य, जब कोई एक बड़ा राष्ट्र, जब किसी दूसरे राज्य के इकोनॉमिक कंट्रोल को सिस्टम को इकोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम को अपने हाथ में लेता है, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म. और जब वो कॉलोनी को एक्सपेंड कराता जाता है, दैट इज कॉल्ड. सो इन ए सिंपल वे, when an imperial power extend his colony to the other country, other region for their economic activities, that is called colonialism. And this process of expansion continued. और क्या देखते हैं? ये process of जो expansion है, that happens to be continued. That is called colonialism. तो सबसे important चीज मैं बता रहा हूं क्या है कि colonialism
इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो कॉलोनियलिज्म हुआ, मेजर कंट्रीज क्या नजर आती है? फ्रांस है, फिर क्या देखते हैं? इंग्लैंड है, फिर क्या देखते हैं? इटली है, फिर क्या देखते हैं? स्पेन है। So these are the major countries who took participation over there in the region of Africa. तो अफ्रीका का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म के माध्यम से हुआ है। Then white settlers became elite and exploited the black native slavery. Impact क्या नजर होता है कि the white people became a dominant part over there. They played a dominant part over there, and they became the real settler over there. In this connection, what happened regarding that? So the black were completely, or you can say, they majorly exploited by the economic means, the other activities over there. क्या देखते हैं? आर्थिक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उनका आर्थिक नुकसान होता है, उका ही करते हैं। एंड दे वेर द ब्लैक नेटिव वेर सीरियसली एक्सप्लॉइटेड बाय होम? द वाइट सेटलर। पहला पॉइंट ये रखेंगे कि इम्पैक्ट क्या नजर आता है कि जो व्हाइट सेटलर्स है जाकर के वहां सेटल किए हैं, उनका वर्चस्व ज्यादा होता है। वर्चस्व ज्यादा होता है तो एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन किसका होता है? ब्लैक का होता है। Another important phenomena, or you can say corollary, came to prominence is what? Slavery. और यहां से कहा जा सकता है कि स्लेवरी की एक परंपरा की शुरुआत हो जाती है। स्लेवरी, इट मींस a person who has been completely bound to do and perform the work according to the need, according to the requirement of the white man, and they are fully, you can say, committed to work and perform over there, और उनको पूरी तरह से उन्हीं के अधीन या उन्हीं के नियंत्रण रहना होता था। So this is what expansion of what, or development of what, slavery came to prominence as a part of tradition, as a part of system. This is the second thing. Third thing, mass killing by the colonial power. सब क्या नजर आता है? जो colonial power है उसकी mass killing होती है। और mass killing का मतलब it is a kind of genocide. Another one you can say it is genocide. It is genocide. Genocide का मतलब कहते क्या है? जब एक रेस की ही killing। So here is the black, or what we can say Negro. So they were severely, what we can say, killed by whom? Those settlers and those who were the white people at all at that time. So this is the significant thing you should have to keep in mind. And policy of divide and rule created problems after independence. आजादी के बाद क्या नजर आता है? डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाओ, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति शुरू होती है। So developing the race between the two native communities over there and make them a competitive idea, not in a positive sense, but it is in a negative sense. तो क्या देखते हैं? Competitive idea develop होता है, जिसके कारण क्या देखते हैं? What important significant thing we consider over here is what? The divide and rule has created a sense of disunity, or we can say disunion over there. The second thing, एक्सट्रीम नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जो सबसे बड़ा चीज प्रभाव नजर आता है, द एजुकेशन सिस्टम वाज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, एंड सो फार हेल्थ हजार्ड एंड हेल्थ प्रॉब्लम इज कंसर्न, अगेन दिस वाज अगेन वेरी पुअर, एंड दे वर कंप्लीटली, व्हाट वी कैन से, they were completely detached from this facility benefit part of that. And other way we can say that there is a disparity in the field of health and development process, and economic development was badly hit. And you know about that, economic, आर्थिक जो है कि नहीं, उसका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान था। तो ये 5-6 बिंदुओं को आप याद रखेंगे, रिपीटेड। पहला क्या है कि सेटलर एलिट, और जिसको कहा जा सकता है कि वहां के जो सेटलर्स थे उनको पूरी तरह से, जो ऑलरेडी वहां सेटल थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्लेवरी की परंपरा बढ़ जाती है, मास किलिंग हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड genocide killing, and policy of divide and rule make them, you can say, disunite. So that is the reason why they control in a very bigger way. And extremely, the education system and health were completely neglected over there, and conditions were what? It was an economic impediment. इकोनॉमिक इम्पेडिमेंट्स, यानी आर्थिक जो कहा जा सकता है डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से रुक सा जाता है, वो पूरी तरह से कमजोर सा होता है। Is it clear? Now come to the point of elaboration. अब मैं elaboration की ओर ध्यान देता हूँ। White settlers became elite and exploited the black native colonial in Africa, brought about the trading, merchant, businessmen, missionaries, military, administrative and officers. देखते क्या है कि जो इम्पैक्ट पहला नजर आता है, व्हाइट सेटलर वहां क्यों आ जाते हैं? उनका ट्रेड पे कंट्रोल है, बिजनेस पे कंट्रोल है। अनदर एक्टिविटी व्हाट वी फाइंड ओवर हियर,
मिलिट्री सिस्टम पे कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर पर कंट्रोल है, साथ ही साथ मिशनरी, कैथोलिक मिशनरी जो कन्वर्जन का काम कर रही है, क्योंकि अफ्रीका का जो मेजर एरिया था, नाइजीरिया है, ट्यूनिस है, इन सब एरिया में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, मुस्लिम डोमिनेटिंग कहा जा सकता है ग्रुप थे वहां पर। तो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस कंडक्ट, दे started expanding, or you can say propagating, the idea of Christian missionary, and conversion was also the major process has taken there. So this is the first part of that. The second was thus today we see as many as country divided into Muslim and Christian dominated region. और वर्तमान समय में क्या देखते हैं, अभी भी पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा कंट्री है जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन से डोमिनेटेड है, कुछ ऐसी कंट्री है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। अगर साउथ की बात करते हैं तो अगेन नाइजर की बात नजर आती है, कोंगो की बात नजर आती है। ये सब के सब जो है कि नहीं ब्लैक कंट्रीज हैं, और ब्लैक पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। और कुछ ऐसी जो सेक्शंस हैं जो अदर कंट्री की बात करते हैं, जिसमें ब्राजील से लेके अन्य देश भी है, तो क्या देखते हैं, दे आर कुछ क्रिश्चियन डोमिनेटेड। यहाँ तक कि ग्रीस में भी क्या देखते हैं, few countries, then you can say few state in Greece is also dominated by the Christian community, and few of what Muslim community at all. So this is again important phenomena, important part over there. क्या देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, मिशनरी इंस्टीट्यूशन जरूर आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है पार्टिसिपेशन किसका है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज का है, मिशनरीज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जरूर। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि वो चाहते हैं कि वहां पर एक कंडीशन, एक ऐसा कंड्यूसिव माहौल हो जाए ताकि वहां की जो नेटिव हैं इनके अगेंस्ट में कोई ऐसा विद्रोह या कोई ऐसा रिएक्शनरी काम करे। तो दिस इज द बेसिक रीजंस बिहाइंड दैट। अनदर थिंग, the European settlers like the Boers in the South Africa became wealthy and powerful in Africa. बोयर्स वार भी हुआ तो बोयर्स जो वहां के जो थे कि नहीं, वेर द रिच पीपल एट दैट, they could manage to dominate the social system or social life of the people. They controlled the government and denied African and any political right. वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करते थे, प्लस उनकी नीति ये थी कि जो अफ्रीकन का जो राइट्स है उसको डिनाई किया जाए, पॉलिटिकल राइट्स को, कि वो चीजें उन्हें ना हासिल, ताकि उनका पार्टिसिपेशन वर्चस्व पूरी तरह से बना रहे। Another important thing, in almost every colony, the land of Africa were taken away for cultivation and mining by the settlers and black working, you can say, a slave. कहने का उद्देश्य क्या है कि अफ्रीका का जो क्षेत्र था जिसमें कंट्रोल मैकेनिज्म या कंट्रोल पावर किसका था, it was African, but it was denied by the foreign settlers who came and settled over here, and they have any political right, you can say, in almost every colony, the lands of Africa taken away by the cultivation and mining activities. And you can say the region of Jharkhand and Jamshedpur, these were the major center of exploitation. For what? For the elite section of that period. The second was that after the elite section, the another one was the middle class people at all, and they were the working class at all. Working class भी उसके साथ में सब। Now the question arises regarding slavery. अब किस चीज की बात करते हैं, slavery. Slave trade made any African forcefully leave their homes to never come back. It destroyed many families. The local Africans traded in the local level of what we can say activity. Because they felt that their situation is not like that the foreign country may penetrate to the another region. And what was the impact of that? Impact of that the slavery was an inferiority complex that was systematically injected into the society, with even the church responding to the notion of master and slave. और क्या देखते हैं, इसके कारण, स्लेवरी के कारण जो चीज नजर आता है, एक चीज डिमार्केट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि स्लेव जो होगा वो पूरी तरह से वो प्रतिबंधित होगा, और जो भी एलिट है उसके अंडर में काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें सेग्रीगेशन सोसाइटी में शुरू होता है। बोथ ऑफ देम आर ह्यूमन बीइंग, बट दे आर नॉट ट्रीटेड वेल. They are not treated well, you can say, at that circumstances. So this led to the idea of what discrimination, what we can say discrimination. Another important phenomena regarding this one is that the race thesis was institutionally developed. और इस thesis को क्या कहते हैं?
इस प्रचार के तरीके को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, रेस थेसिस. दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से, दिस इज कॉल्ड रेस थेसिस. So under this race thesis, what we get the beneficiaries over there. Race thesis institutionally deployed to deprive Africans. क्या देखते हैं, अफ्रीकन को डिप्राइव कर, Africans of their right during the apartheid in South Africa and Zimbabwe. और कंडीशन क्या नजर आता है, साउथ अफ्रीका पहली चीज क्या नजर आती है, दूसरी चीज क्या है, जिम्बाब्वे. सो दीज आर द टू मेजर रीजन्स where the dominancy of what we can say availability of slavery prevailed over there. Next one. Another tragic thing happened over here. जो सबसे tragic thing यहाँ पे होता है, tragic चीजें होती है, tragedy होती है, वो क्या होती है, mass killing of the colonial. What is the important thing? It was the mass killing. What exactly is that? It was the mass killing by the colonial power. So colonial power did here what? The activities of mass killing. And mass killing का मतलब again it is a condition of genocide kind of thing too. That is African killing जो हो रहा है केवल black का ही हो रहा है, African. The African resisted the colonial military with great valor, and they could not fight against the technology and the guns with the Europeans. So due to technological advancement of what? Technological advancement of the European countries, they were unmatched. What is that? They were unmatched to the scenario of the existing condition over there. And that is the reason why they are badly beaten. उनको बुरे तरीका से मारा गया, उनको बुरी तरह से कहा जा सकता है कि जेनोसाइड किलिंग हुई. Again, now another thing, many Africans were killed by the European military while resisting the loss of his slavery. Unfavorably, you can say, treaties affect by the Europeans and the imposition of the other country. This is the condition. Now, Belgium Congo probably witnessed the first genocide of the modern era. मॉडर्न एरा का जो सबसे बड़ा जेनोसाइड किलिंग नजर आता है, किसका नजर आता है, वो कोंगो का किया गया. और फिर क्या देखते हैं, मॉडर्न एरा जब से शुरू, ये सबसे बड़ा, सबसे अधिक कहा जा सकता है. और द कंडीशन that is the principle that has gone to that place. That is, what is that? The policy of divide and rule is also one of the important facets over there. Policy divide and rule की एक सबसे बड़ी नीति थी, एक मुख्य बिंदु नजर आता है जो इस कंडीशंस के लिए कंड्यूसिव नहीं है. Policy of divide and rule created problem after independence of Africa due to many factors. Geographical factor is there, then comparison to the multiple tribal culture is also there. अब क्या देखते हैं, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका डिवाइडेड अफ्रीका इनटू कॉलोनी. जब अफ्रीका का विभाजन होता है, स्क्रैम्बल का मतलब क्या है, विभाजन होता है. ड्यू टू मेनी फैक्टर्स व्हिच डिड नॉट फॉलो द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी, कल्चरल यूनिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये दोनों चीज को साथ नहीं देता. दिस सिक्योर्ड इन कॉलोनीज हैव मल्टीपल ट्राइब्स, रेस, वेरी डिफरेंट कल्चर. और हर एक कॉलोनी में क्या देखते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग आर्थिक अवस्था वाले लोग हैं. सारे के सारे लोग जो है कि नहीं, एक ही कॉलोनी, एक ही रीजन्स में रह रहे हैं. दिस इज अगेन द मेजर फैक्टर ओवर देयर. Another important thing, this resulted colonies having multiple tribes with every different culture, and they did not have only the capacity of what exploitations and other activities. So it was not possible from the Indian at all. And another thing, they did not see, what is that? They did not see themselves as पार्ट ऑफ द वन नेशन, और वो एक नेशन के रूप में कभी भी अफ्रीका अपने आप को नहीं देखता. कारण क्या है, उत्तरी अफ्रीका हो, दक्षिणी अफ्रीका हो, पूर्वी अफ्रीका हो, या नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका हो, वहां पे अधिपत्य बार बार दूसरों का देखा गया, और जिसके कारण वो अपने आप को फ्री नहीं समझ सकता है, वो अपने को ये पार्ट नहीं समझ सकता. They patronized one tribe expense and the other. The favor of tribesmen we provided with arms and money and were used to coerce the other tribal submission. और ये भी बताया गया कि आप अपने फाइट के लिए खुद का हक करो, because nobody is going to provide you support over there. Okay, so that I got the point regarding this. So the tribesmen massacre million of the Tutsi tribes members, the lack of national unity which hunted to the African nation.
और आगे चल के क्या देखते हैं, लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ लैक ऑफ लैक ऑफ reach, another way you can say lack of reach, or the tribesman massacre. Millions of Tutsi tribes lack the national unity and they still, what we can say, hunts many African nations, or many African nations का hunt करते हैं, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को मिलती हैं. Further, the colonial rivalry, what we can say, further the colonial rivalry resulted in colonists establishing trade barrier between colonies, and thus an integrated market could be developed across Africa. क्या देखते हैं, एक बड़ा मार्केट डेवलप हो जाता है across अफ्रीका, अफ्रीका के across एक बड़ा मार्केट डेवलप हो जाता है. This is again a very important thing happened, situations happen over there. Next one, कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. जो तीसरी चीज सामने नजर आती है, द कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. द इलेक्टेड गवर्नमेंट फेल टू डिलीवर अनदर इनपुट. जस्ट ए मिनट में. Mass killing by colonial powers, then neglect of education and health. So this thing I would like to discuss a bit more. So colonists and the white settler ensured native black get educated. Higher education in the particular was neglected. अब क्या देखते हैं, हायर एजुकेशन का प्रावधान नहीं है, कंडीशंस नहीं. किसके लिए, जो नेटिव वहां के हैं, सेटलर्स हैं वहां पे. Whereas the policy of apartheid was followed, और वहां पर apartheid का कह सकते हैं एपार्थेड की पॉलिसी को बिल्कुल कायम रखा गया था. और ड्यूरिंग एपार्थेड पॉलिसी द थिंग वेयर डिफरेंट इन ए डिफरेंट वे. क्योंकि एपार्थेड का मतलब होता है टू कीप सेपरेट ऑफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपार्थेड? टू कीप. व्हाट इज दैट? टू कीप. व्हाट इज दैट? टू कीप सेपरेट ऑफ. टू कीप. व्हाट इज दैट? टू कीप सेपरेट ऑफ. कीप सेपरेट. टू कीप सेपरेट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप को अलग रख करके इस सुविधा की युग के लिए डेफर करो, चीजों को लेकर के चलो. सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड हैव टू कंसीडर फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू. Another conditions regarding this one, what we see over there, that the clause would have, what is that? The clause would have required colonies to develop infrastructure and set up government machinery for things like what we can say, for things like the development process, the benefit responsibility, things like the little infrastructure was also the important part. उसके साथ में little infrastructure जो है एक अलग सी चीज. Thus African nation, the colonists ruled to reap the economic benefit. क्या देखते हैं कि उसके जो रूल करने का तरीका था, उसके रूल करने के तरीका में जो सबसे बड़ा एडवांटेज नजर आता है वो क्या देखते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट का नजर आता है. The title and infrastructure was also developed, facilities also developed. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ध्यान में रखेंगे, चीजों को रखेंगे कि इसकी आर्थिक जिसका लॉस होता है, जो वहां के नेटिव. गेन किसका होता है, जो कॉलोनिस्ट वहां पे पहुंचते हैं. द ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर एम एट क्रिएटिंग लिंकेज बिटवीन मिनरल रिसोर्सेज. और वहां पर जो क्या देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट है, transport is there, communication system is there. With the help of transport and communication system, many more things you can access to procure this material become linkage between material were very much developed, and what we can see, what advantage part over there. Then further, the colonial rivalry resulted in a colonist establishing trade barriers between the colonies, and the integral market policy was तो another factor. तो इस प्रकार क्या देखते हैं, कॉलोनीज का एक्सपेंशन हो रहा है, चीजें डेवलप कर रही हैं. एंड द कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नजर आता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है. The elected government failed to deliver the huge development goals and became dependent on the developed world for aid, which brought, you can say, neo-colonialism to Africa nation. तो इसको जानना पड़ेगा, नियो-colonialism, और किस प्रकार से वो कोलैप्स हो जाती है, कंडीशन क्या हो जाता है. कंडीशंस क्या नजर आता है, नियो-colonialism. If you talk about neo-colonialism,
what is the important thing? The neo-colonialism is an action. What we can is a base of what? Base of colonialism. Neo-colonialism क्या? Colonialism क्या है? When a big country used to control the economic finances of the other country is called it is called colonialism. It's called colonialism. Now colonialism is that when the other sources, when the earning come from other sources, and and we received we received the other part of that, we can also send it to the other section. न्यू colonialism में क्या होता है? What is important for the neo colonialism? Just a minute. Neo colonialism, it is again a colonialism. In this scenario, what we see in this scenario, we see that big colonial power can say compel you to purchase their own goods at their different market. न्यू कॉलोनी जैसे भारत है, भारत में सबसे ज्यादा एमएनसीज की चीजें हैं, सारी पैकेज गुड्स एमएनसी द्वारा बनाए गए हैं, विदेश की बनाई गई। तो क्या देखते हैं कि if still the colonial country, the colonialism is over, but still the powerful country is dominating to the economic need of the people, economic activities of the people. That is what we can say, that neo-colonialism. And in this neo-colonialism, what we find over there, they create an extra power to the government, to the native government over there. So that is the reason why they create their very strong influence, the country like India and all the developing countries of the world. इस चीज को जानना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. That is the important point. But still, what we can say, but we still scenario is completely different in a different way. The colonists ensure the indigenous industries is also one of the important part. Collapse of the democratic system की जब बात करेंगे तो क्या देखते हैं? But in struggling to convert this bugle in the working age group in a democratic dividend due to lack of education, which the peasant could not ensure the skill development. तो कहते क्या है कि अगर अवेयरनेस नहीं है तो कंडीशंस क्या नजर आता है? डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोलैप्स होता चला जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम की विशेषता क्या है? द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इज बैडली नीडेड to that condition. So to some extent their move is what we can say, their movement is also continued part over there. Next one. HIV AIDS today is the most prevalent in Africa. अफ्रीका में क्या देखते हैं? अब तो कम हो गया है, कोविड का भी कंडीशन है. HIV AIDS prevailing in Africa was quite common, and it was the biggest intervention of the development of other activities, and it was the biggest challenge to the World Health Organization and NGO like Bills and Mahinda. Again, this was like to you, so that you could manage to have these ideas before. You could manage to have this idea. Another important thing regarding this one, the NGOs like Bill and you can say Melinda Gates Foundation is also important part for the development process. Economic development hurt colonialism impact the social, psychological, economic, cultural and political aspect of the colony. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इकोनॉमिक जो कोहेजन होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह से बाधित होता है. क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट सोशल सिस्टम पे है, साइकोलॉजिकल सिस्टम हो जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पे है, other system is also prevailing over there. But the problem is that the situation is not core at all. The situation is not core at all. Conditions में one more thing is very much noticeable to you, that the lack of cohesion in the society due to tribal rivalries, presence of prejudice and slave race. देखा क्या जाता है कि एक पुराना प्रोजेडिस बैठा है कि जो ट्राइबल है वो अच्छे नहीं, वो ईमानदार नहीं, वो डिसिप्लिन नहीं, साइकोलॉजिकली दे आर नॉट वेरी साउंड एट ऑल टू. और उनको कैसे आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, स्टिल दे फेल टू पार्टिसिपेट ओवर देयर. That is again important point over there. Another one, the lack of cohesion in society due to tribal rivalries and the psychological, what tribal rivalries जो चीज नजर आती है, presence of prejudice of being a slave race which were internationalized and conquest inferiority.
consequent inferiority, lack of education and denial participation in governance. देखते क्या education, if they don't have education they can't join the group of the governance. And finally what we see that the administrative system failed in this connection, a very timid, a very weak at all. Now come to another point. Opium war, that is also the factor over there. Collapse of democratic system. So this way democratic system completely collapse. इस प्रकार देखते क्या है, जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाती है. Now another condition is that collapse of democratic system, अभी डिस्कस किया मैंने आपको. Now ओपियम वॉर, अब यहां से शुरू होती है किस चीज, ओपियम वॉर. ओपियम वॉर का मतलब क्या होता है, ओपियम अफीम के लिए युद्ध की अवस्था, युद्ध की स्थिति. कोलोनियलिज्म इन चाइना फॉलोइंग द बुलेट पॉइंट, मैंने बुलेट पॉइंट में दिया है. दिस शोज अबाउट दैट कोलोनियलिज्म इन चाइना. चाइना वाज डिस्कवर्ड बाय द पोर्चुगीज इन 1514. ये फैक्ट ओरिएंटेड है, इसे लिखते भी चलना. चीन का पहली बार डिस्कवरी कब होती है, 1534 में, वास्को डेगामा के जरिए. was facilitated over, China was facilitated over there. No facility, whatever the rule I have taken from that should be the important thing. That should be the important part to you. Next one. China was discovered by Portuguese. इस चीज को याद रखिएगा. China was discovered by Portuguese in 1514 and they established trading relation with China by setting up a trading, you can say, canton in 1557. एक कैंटोन बनाने के बाद क्या देखते हैं, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बढ़ जाती है इनकी और कह सकते हैं कि इंडिया की. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट China followed a policy of seclusion and only limited trade up and down. कंडीशंस क्या नजर आता है, चीन की जो नीति है, पॉलिसी है, वो सेक्लूटेड फील होती है और ये मान करके चलता है, प्रेजुडिस है कि उनका जो चीज होगा, जो यूटिलिटेरियन मटेरियल होंगे, that is not going to be changed the part of that. So in this condition the traditional theory is nullified या reject किया जा सकता है. Next one. But China followed a policy of seclusion and only limited trade happened with them. The Opium War in 19th century forced China to open the rest of the world, that is India, that is trade and flow of the foreigners in the establishing democratic relations. What happening today? In this time, the Opium War in 19वीं शताब्दी को जो ओपियम का युद्ध लड़ा गया, उसमें एक खास बात क्या निकल करके आती है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो चाइना को ओपन कर दिया गया फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हु विल लुक आफ्टर दिस एस्टेब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. That is why I am asking to you. So in the latter part of that, this can be eliminated. Now come to the point regarding the Opium War of 19th century forced China to open up a set of the trade routes and whom to follow it. Trade allowed for foreigners in the establishing democratic relation. अब democratic relation को establish करने के लिए क्या देखते हैं, democratic relations को establish करने के लिए cultural activity को बढ़ावा दिया जाता है. And this way it was a big opportunity for what we can say, big opportunity for those countries, those who were in a process of what we can say developing their nation state. That is the part. So Taplin Rebellion, another condition is Taplin Rebellion in 1854 and 64 was a religious movement which was crushed by provincial armies of China. And later on it became independent part of that. तो क्या देखते हैं कि जापान का इन्वेट किया जाता है 1864 में और फाइनली देखा ये जाता है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ जाने के बाद ही व्हाट एवर दैट यू कैन डू दिस पार्ट ऑफ दैट अब फिनिश करने के बाद ही. तो लॉस ऑफ टेरिटोरी नॉर्थ ऑफ रिवर आमूर टू रशिया इन 1858. क्या देखते हैं, रिवर आमूर जो रशिया की उत्तर में है, वहां तक इसका एक्सपेंशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. देन जापान इन्वेडेड चाइना. जापान का आक्रमण होता है कब, 1894-95 एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ चाइना अंडर द कंट्रोल स्पेशली ऑफ द मंचूरिया. क्या देखते हैं, मंचूरिया के प्रोसेस को कंट्रोल करने की स्थिति में आता है.
That is important. Next one, Boxer rising occur in during 1899 to 1900. तो बॉक्सर रेबिलियन की बात करते हैं वो 1899 900 में 1900 में डेवलप करता है। एंड जापान इमर्ज विक्ट्रियस फ्रॉम द रशियन, रूसो जापानी वॉर हुआ था 1904-5 में और मिलिटरिज्म इन जापान था और जापान ने बहुत बुरी तरीके से क्या देखते हैं रशिया को डिफीट, रशिया को हराया। एंड रशिया फ्रॉम अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, और रशिया ऐसा लग रहा था कि वो चाइना के कंट्रोल में है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अनदर वन इज व्हाट इन 1911, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 1911 फेमस क्यों है तो क्या जवाब दीजिएगा? इंडिया के कंटेक्स्ट में याद रखना चाहिए 19, और क्या देख रहे हैं इससे डेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाए आसानी से देखा जा सकता है। TMT fought the civil war with the Chinese Communist Party which emerged victorious in 1949, और क्या देखते हैं कॉमिंटर्न कि पार्टी जब सामने कम्युनिस्ट पार्टी कहा जा सकता है कि जब इमर्ज करती है तो क्या देखते हैं एस्टैब्लिश ए कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और भारत और क्या देखते हैं चाइना में established form of government came to prominence in China while Chiang Kai-shek fled to Taiwan, और क्या देखते हैं what we see over there, Chiang Kai-shek भाग कर करके जापान में ताइवान में शरण लेते हैं और गवर्नमेंट उन्हें एग्जाइल पे निकाल देती है। जो टॉपिक को आप देखेंगे वो टॉपिक है इवेंट्स इन चाइना डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज, यानी चाइना में खास करके बॉक्सर रेवोल्यूशन या कह सकते हैं ओपियम वॉर इसलिए हुआ कि चीन की खोज की गई तो सबसे बड़ा योगदान किसका नजर आता है? पोर्चुगीज का नजर। नाउ कम टू दिस पॉइंट, चाइना वाज डिस्कवर्ड बाय द पोर्चुगीज एंड ट्रेड रिलेशन वेयर इनिशिएटेड देयर, और रिलेशंस को डेवलप नहीं किया गया था। दैट इज द कंडीशंस एट दैट टाइम, उस समय भी कंडीशंस। By 1730, European nations were trading with China. China with USA started trading in 1780. दो चीजें होती हैं, 1730 का जो फेज है उसमें दो चीजें डेवलप होती हैं, यूरोपियन नेशन ड्राइव करना शुरू करती हैं और यहाँ तक कि ब्रिटेन तक ड्राइव करके ले जाती हैं। तो और कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट की बात करते हैं, जो चीज नजर आती है वो ये नजर आती है कि व्हाट वे यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस ओवर, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, दैट इज द पार्ट हैज टू बी डिस्कस्ड। नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट दिस वाज अपोज्ड बाय चाइना एंड resulted what is that and resulted opium war in 1870 in 1970, उसकी बात करते हैं हम लोग। Now another thing, those who are watching the video please come online, those who are watching the video please come online। जो लोग भी देख रहे हैं आप सामने आओ ना, आप क्वेरी करोगे, जवाब मांगोगे तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। दैट वुड बी एन इंटरैक्टिव सेशन। इफ्तिखार जुल्फिकार क्या आप हो क्या? एसएन सिंह आप हो क्या? अगर हो तो अपना प्रेजेंस बता दो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट। प्लीज मेक ए क्वेरी, मेक ए क्वेश्चंस टू मी regarding explaining the answer related topic part of that. So this was opposed by China and resulted in opium war। अब क्या देखते हैं ओपियम वार का कारण? अब देखो क्या, द ब्रिटिश वे आर फेसिंग बर्डन ऑफ द ट्रेड डेफिसिट। ब्रिटिश को सबसे ज्यादा बर्डन क्या लग रहा था कि कॉलोनी में एस्टैब्लिश था, वॉर जो हुआ तो उसके काफी हद नुकसान हुए थे। वो चाहता था कि एक फिक्स्ड अमाउंट कहीं से भी मिल जा सके। So what it thought it out that a fixed amount should receive from them. As a solution to them, the British started exchanging opium for payment। अब शुरू क्या करते हैं? ओपियम देने के बदले क्या देखते हैं? धनराशि देखते हैं। So they wanted to check, regarding this one, that is another part of that, that is wonderful part of that। And another important thing in this connection, this was opposed by the China and resulted of opium war का कारण क्या था? वो चाहते क्या थे कि ओपियम को बेचे दूसरी कंट्री से उनको ज्यादा लाभ था, ज्यादा फायदे थे। भारत नहीं चाहता था कि भारत का फंड, भारत के पैसे भारत से बाहर जाएं। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। दिस वाज अपोज्ड बाय चाइना एंड रिजल्टेड इन ओपियम वॉर। पेमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन, टी, सिल्क, क्या देखते थे? टी आती थी कहां से? ब्रिटेन से। टी आती थी ब्रिटेन से, एंड सिल्क का भी व्यवस्था था वहां से। इन द लेटर पार्ट इट हैज डेवलप्ड ओवर। इंडिया में क्या देखते हैं? लेटर पार्ट में ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन,
regarding this one. Next one is what? In what sense next one? Trading activity in China. अब क्या देखते हैं trading activity, how it expanded in the region of China. China was forced into giving the updation to trade with the West major China. So he wanted to interpret the test for Varijano conditions नजर आती है. The main thing, what is that? It was the main thing to go and to do this kind of activities over there. This meant that the British could trade with the Chinese under the custom duties were reduced. क्या देखते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जा रही थी वो कस्टम ड्यूटी को घटा दिया जाता ताकि ट्रेड का वॉल्यूम बढ़े. Also, a British diplomat was permanently estored this action. It was estored by this action. After the Second World War, after the Second Opium War, sorry, I beg a pardon, the trade treaties were revised and even more Chinese ports were open. Even though Chinese ports were open, बहुत सारे Chinese ports open होते हैं और जो रिवर में जो ports open होते हैं वो क्या देखते हैं? Clearly travel the occasion. China was made a guarantee, or you can say paid objective over there. Now the opium trade was also realized after the Second Opium War. So all the things were very well done, very well designed over there. कह सकते हैं इस चीज design over there. After the Second Opium War, many more European nations, some South African nations and Japan established trade relation with China. अब क्या देखते हैं? 19वीं शताब्दी में देखते क्या है? ओपियम वॉर की बाद से कि बहुत सारे यूरोपियन नेशन वहां पहुंचते हैं और अपनी कॉलोनी को एस्टेब्लिश करते हैं. नाउ इवेंट्स इन चाइना डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज. अब चाइना और चीन में घटने वाली घटनाओं को आप इस क्रोनोलॉजी में जान जाए. पहली बात क्या थी कि चाइना वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज. पहली चीज क्या मतलब बात मिलती है कि चाइना का डिस्कवरी कब होता है? 1514. अच्छा, ये अंक भूला भी नहीं जा सकता, 1514 है ना. तो उसने क्या किया? कन्फ्यूशियनिज्म की परंपरा को हटाने की चेष्टा की. कन्फ्यूशियनिज्म बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि वो चीन का एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ था. दैट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट थिंग विद रिलेशंस विद द सेटिंग ऑफ द ट्रेडिशन. दूसरा क्या? 1730 में ऑल यूरोपियन नेशंस वेयर ट्रेडिंग इन चाइना. अब क्या देखते हैं? 1703 के आसपास जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं वो दंपत्ति के स्वरूप उस कंडीशंस जो मैनेज करते हैं या उस पीरियड में चलते हैं. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड हैव टू योर माइंड व्हाइल गोइंग टू द डिफरेंट एस्पेक्ट. क्या देखते हैं? स्टडी हो रही है डिफरेंट एस्पेक्ट. In 1730, what has happened? In 1730, European nations were trading with the China. और चाइना ही नहीं, कई सारे नेशन इसको क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं. Important. Just a minute. Another important thing, after the Second Opium, many European nations joined over there. European nations जो ज्वाइन करते हैं, साउथ अमेरिका है, जापानीज है, उन सबों ने अपना अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट. And China lost the Second Opium. So the loss of territory north of the river Amur के नजदीक का ये क्षेत्र है. So Russia in 1858, or in 1858 China was weak. It was losing in the Second Opium War, was fighting the Tapling Rebellion in 1858. Russia increased the attack. Thus the force China had to, you can say, huge amount of territory on the North Amur River. क्या देखते हैं? चीन का बहुत बड़ा वर्चस्व था. कहाँ? आमूर रिवर में बहुत बड़ा वर्चस्व था, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंदता एक अलग कंडीशन से थी, एक अलग सिचुएशन से थी. So that is why it was proved very much effective so far English is concerned and Hindi is also. So this way I can there. Now it is a tea which was circulated. नजर क्या आता है? It was a tea which was circulated. It was a tea which was circulated and has a positive note with the rest of the world. Its tea was curtailed by the British in the emergence of processing another feet बनने के कंडीशन भी चीजों में उपलब्धता नजर आती है.
Opium War in 1840, Manchu ruler. What exactly is that? The Manchu ruler. Manchu ruler or Manchu dynasty ruled for China during 1640 to 1980. क्या देखते हैं 1640 से लेके 1911 तक कर देते हैं. Discussed above this that the 1840 Manchu ruler followed the policy of seclusion and isolation. और जो मंचू रूलर थे कहाँ के? चीन के. उन्होंने अपने आप को सिक्लूजन में रखा, अपने आप को घेरे में रखा, अपने आप को एक शेल में रखा. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो शेल में रखा and its tea was circulated by the British in their empire and rest of the world. और देखते क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टेकन द चार्ज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग ऑफ दिस. Then it is tea was, you can say, circulated by the Britain in their empire and the rest of the world. और ब्रिटेन का क्या काम था? टी का एक्सपेंशन कर रहा था. खास करके अपने तो कंट्री में किया ही, साथ में दूसरे कंट्री में भी प्रचार प्रसार जैसी चीजें उपलब्ध होती, क्योंकि कंडीशंस तो मेरे साथ ही फेस किए थे. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. नाउ कीपिंग माय एग्जांपल इन अ डिफरेंट trust and different platform and talk to the core part of what China lost the opium. It was able to sustain. अब इसमें जानेंगे क्या? चाइना ने जो ओपियम वॉर सेकेंड उसकी डिफीट हुई थी, उसके पीछे कारण और बेस को जानने. ओपियम वॉर इन 1840s, मंचू रूलर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सप्लाई. हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? कि मंचू डायनेस्टी. मंचू डायनेस्टी किसी के साथ इंटरेक्शन, किसी के साथ जो है कि नहीं समझौता या किसी भी प्रकार की संधियां रखना चाहती थी. नेचुरल सी बात है, जब कोई कम्युनिकेशन कांटेक्ट नहीं है तो वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, चलेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस वन, द मंचू डायनेस्टी की बात अगर, इट वाज एबल टू सस्टेन आइसोलेनिस्ट पॉलिसी because one of the important part of major upheaval in the China, and remembering it generally the powerful till 1842-40. Their aim was to make China an exporter of raw material. उद्देश्य क्या था मंचू डायनेस्टी का? कि एक्सपोर्ट मटेरियल जितना हो सके ज्यादा चाइना से एक्सपोर्ट किया जाए. दैट इज द कंडीशन देयर, बिकॉज the consumer market was already being created, but that was not at a high level of that, but that was a good kind of market. Now another important thing in this connection, their aim was to make China exporter, and the birth of conditions is what? Remaining different, remaining diverse. There was no major upheaval in China and it remained generally peaceful. Conditions है. And then USA intervened in 19th and 20th century. क्या देखते हैं? 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच इसका इंटरवेंशन होता है, USA का इंटरवेंशन, and imposed an open door policy. और अमेरिका ने पहली बार ओपन डोर पॉलिसी को लागू किया. ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है सबों के लिए फ्री, सबों के लिए आजादी, किसी भी प्रकार से इस वो पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर भाग ले सकता है. That is the major part over there. Then now shaping rebellion in China during 1850 and 64. 1854 और 60 के बीच क्या होता है? रेबिलियन एक्शन होता है. किस रीजन में होता है? साउथ चाइना. इट वॉज ए पार्टली रिलीजियस एंड पार्टली पॉलिटिकल मूवमेंट. और ये जो आंदोलन है इसको हमेशा कहेंगे कि पार्टली पॉलिटिकल है और पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव. With a Christian tapping, rebels demanded to shred a property common to them and equality for women and replacement of Confucianism. और अब यहाँ से क्या देखते हैं? कॉन्फ्यूशनिज्म को भी उखाड़ फेंका जाता है, हटाया जाता है. कारण क्या नजर आता है? महिलाओं के अभद्र व्यवहार हुए होंगे. जब कंडीशंस जब सुनाता हूँ या कंडीशंस जब बताता हूँ. तो कन्फ्यूशनिज्म, बुद्धिज्म एंड चाइनीज फोक रिलीजन, देयर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्या देखते हैं? जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन होता है, किस रूप में कहा जा सकता है? वेलफेयरिज्म के रूप में, और कह सकते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या कह सकते हैं कि द लिबरल पॉलिसी एंड आउटलुक ऑफ देम. सेकंड कंडीशंस क्या नजर आता है? वेजिटेरियन. एंड द थर्ड कंडीशन इज आल्सो shown like that it is going to be privileged to this other, you can say, aspect and topic. So this was important sections over there in this connection.
what we can say that this was important connection over there. ये connection ऊपर नजर आता है. The Senkaku Island in the South China Sea, which was today point of contention between the China and Japan. जापान और चीन के बीच एक बहुत बड़ा कंटेंशन या एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट नजर आता है जो शेकू आइलैंड के क्षेत्र. What is that? Also, Manchuria came under the economic influence of Japan. Manchuria जापान के इन्फ्लुएंस में आ जाता है. And a lot of capital investment. और उसके साथ में क्या देखते हैं? Capital, a lot of investment होता है. By the period of 1890, Manchuria was very important due to its high coal. इसका कारण क्या था कि हाई कोल और मिनरल रिजर्व यहाँ पर अवेलेबल थे. आगे चल के हम डिस्कस करेंगे मंचूरियन क्राइसिस. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड एक्सेस टू पैसिफिक ओशन. और इसका जो कंडीशंस था वो क्या देखते हैं? एक्सेस ये देखते हैं पैसिफिक ओशन तक इसका एक्सेस फैला हुआ था. आफ्टर द सेकेंड ओपियम वॉर मेनी मोर यूरोपियन नेशंस, साउथ अमेरिकन नेशन एंड जापान एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद चाइना. तो सबसे बड़ा आउटकम निकल करके क्या आता है? व्हाट इज दैट? चाइना बिकेम अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर ओवर देयर. चाइना क्या होता है? एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हो जाता है और हर कंट्री आकर के वहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटी. अब जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बॉक्सर रिविलियन. ये सवाल टिप्पणी भी पूछा गया, नोट्स भी पूछे इसके बारे में, बॉक्सर रिविलियन के बारे में. तो थोड़ा सा बॉक्सर रिविलियन के बारे में हम लोग जान लेंगे. बॉक्सर. By 1900, China was divided into spheres of influence. Thus, China was reduced to a status of international colony. क्या देखते हैं? उसका स्टेटस जो है रिड्यूस करता है. और जहां स्टेटस रिड्यूस करता है तो वो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरह से वो एक बॉडी बन जाता है, एक सिस्टम ओपन के रूप में आ जाता है ना. In 1900, China was divided into a sphere of influence. Thus, China was reduced to a status of international colony. Felt that it would soon be partitioned with each imperial power ruling in the sphere of influence. Second one, the rebellion was against the foreign interference of the political, economic and religious affairs. और रिबिलियन क्यों होता है? क्रांति क्यों यहाँ पे हुई थी? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस हो, रिलीजियस हो और कल्चरल. और नजर क्या आता है? क्रस्ट बाय द ज्वाइंट एंग्लो जर्मन रशियन फ्रेंच जापानीज अमेरिकन फोर्स. और यहाँ की ये सारी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी एंड इवन दो द कल्चरल लिबर्टी वेयर jointly suppressed by whom? Suppressed by German, Russian, France, say African and also there. So this way we can say that the other power used to exploit them in a very, very proper way. Another important thing, the empress was forced to pay massive compensation to damage the foreign property. क्या देखते हैं? फॉरेन प्रॉपर्टी में जो कहा जा सकता है मेजर डैमेज होता है तो ब्रिटेन की महारानी को फोर्स करती है कि उनको कंपेंसेशन तो किसी हालत में देना पड़ेगा. So the Boxer Protocol signed thereafter allowed the power to station on their troops and protection of their citizen in China. इसके लिए आजादी भी इसीलिए दी जाती है कि जो ह्यूज लॉस हुआ है इसको किस कंडीशन में रिकवर किया जाता है. आफ्टर द ट्रीटी ऑफ रशिया कंटिन्यूड ऑक्युपाई टू मंचूरिया. क्या देखते हैं? रूस की संधि होती है. रूस की संधि होने के बाद एक खासा डेवलपमेंट क्या होता है? एक खास डेवलपमेंट क्या होता है कि रशियन कंटिन्यू टू ऑक्युपाई ऑल मंचूरिया. और मंचूरिया को रशिया धीरे धीरे सब क्षेत्रों को कंपाइल करना या कह सकते हैं कंप्राइज करना शुरू कर देता है, कंट्रोल करना शुरू. एंड इन द लास्ट फेज रशिया कुड सिसीड शाखालीन आइलैंड. क्या देखते हैं? रशिया अपनी शाखालीन आइलैंड को लूज करता है टू जापान से. एंड द विन एस्टैब्लिश जापान ए मेजर वर्ल्ड पावर यू कैन यूज ऑफ रशिया. क्या देखते हैं? जापान एक बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर आ जाता है. कब? 1905 में रशिया को डिफीट. चाइना क्लेम्ड रिपब्लिक. और अल्टीमेटली क्या नजर आता है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाज केम टू प्रोमिनेंस इन चाइना by young intellectuals, but the provincial armies opposed such reform, and in a military coup in 1911 the nascent government was overthrown. क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाइना क्लेम करने की प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन समस्या क्या आती है, वहां रिफॉर्म जो मिलिट्री में किया जाता है, उसने 1911 में कू किया, मिलिट्री कू, POO कू, OUP, कूप का मतलब क्या होता है, अधिपत्य जमा लेना, यानी फोर्सिवली, इट इज ऑलवेज फोर्सिवली एंड इट इज ऑलवेज बाय मिलिट्री, इट इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय मिलिट्री। द कू जब भी होता है उसमें मिलिट्री की योगदान या मिलिट्री की व्यवस्था जरूर होती है। चाइना वॉज प्रोक्लेम ए रिपब्लिक अंडर द मिलिट्री जनरल नेम जुआन शाइकाई। जुआन शाइकाई के नेतृत्व में क्या देखते हैं, China became republic. What we see over there, China became republic in 1911. Further, when Yuan Chai declared himself to be Europe, you can see emperor in 1915 against the wish of the provincial army, he was removed from the power, and the warlord era began. Democratic reform demanded by the young intellectuals. अब क्या देखते हैं, warlord era की शुरुआत होती है जब यंग इंटेलेक्चुअल्स टाइप के मूवमेंट शुरू होते हैं, क्योंकि नया जनरेशन इसमें पार्टिसिपेट करता है. बट द प्रोविंशियल आर्मीज अपोज सच रिफॉर्म एंड इन मिलिट्री कू इन 1911 द नेसेंट गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन. और जो गवर्नमेंट जल्दी में 1911 में बनी थी, उस गवर्नमेंट को पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया जाता है. फर्दर व्हेन द युआन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी एम्परर, युआन अपने आप को डिक्लेयर करता है एम्परर 1905 में, against the wishes of the provincial armies. He was removed from the power and warlord began era, और warlord era का शुरुआत होती. तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कोलोनियलिज्म के साथ साथ क्या देखते हैं, इमर्जेंस ऑफ जैपनीज पावर की भी बात करते हैं. इस पावर के इमर्जेंस होने में बड़ी कंट्री की तरह से सबसे बड़ी भूमिका किसकी नजर आती है, द डेवलपमेंट ऑफ, यू कैन से, भूमिका ऑफ यू कैन से चाइना. और दीज आर द मेजर रीजन. रशियन एम्पायर के साथ करते हैं, जापान, ये क्षेत्र क्या देखते हैं, जापान मोल्डोवा का क्षेत्र. देन यू कैन टॉक अबाउट द कोरियन रीजन इज ऑल्सो. So this topic of world history, basically this topic is corroborated by, you can say, opium war और बॉक्सर रेविलियन के नाम से जाना जाता है. दिस वे यू शुड हैव टू प्रोसीड ओवर. इस प्रकार से आप प्रोसीड करेंगे, और कल मैं सेम समय में सेम कंडीशन में क्लास लूंगा. पॉलिटी का सेक्शन लूंगा जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू का है, और हिस्ट्री ऑप्शनल को आप लोगों के साथ, ताकि इट वुड बी डिले प्रोपोर्शन. ये जो चीज हो जाएगा वो एक डिले प्रोपोर्शन